Hello, good afternoon student. My name is Hiral Raval, standard 10 subject science. Student, we already completed our syllabus. Then to decide, we decide to give a notes. Okay student. So chapter 1 chemical reaction and equations. Topics in this chapter: introductions, chemical reaction, chemical equations, balanced chemical equations, types of chemical reactions, corrosion and rancidity. Okay. So first we have introduced this chapter. So introductions. Most of the substance around us undergoes various changes. Some of these changes are temporary with no new substances being formed. They are called physical changes. Okay students. I repeat, most of the substances around us undergoes various changes. Some of these changes are temporary with no new substance being formed. They are called physical changes. In certain other changes, the new substance formed in which the reactant or the parent loses its identity to form new substance called product. These changes are permanent changes as we won't get the reactant back. Okay. तो ये जो है वो हमने फिजिकल चेंज के बारे में देखा. नाउ केमिकल रिएक्शन. Chemical reaction is the process by which two or more substances react with each other to form new substances with different properties. These are the following changes to determine that the chemical reaction has taken place. First, change in state. सबसे पहले कोई भी चीज़ में केमिकल रिएक्शंस होता है स्टूडेंट, तो उसमें जो है वो स्टेट चेंज हो जाता है. जैसे कि लिक्विड स्टेट हो तो गैसियस स्टेट हो जाता है ना. तो चेंज इन स्टेट. सेकेंड, चेंज इन कलर. देन थर्ड, इवोल्यूशन ऑफ गैस. देन फोर्थ, चेंज इन टेम्परेचर. Their chemical equations. A chemical equation is the symbolic representations of a chemical reaction in the form of symbol and formula, wherein the reactant entities are given on the left hand side and the product entities on the right hand side. Here magnesium plus oxygen gives magnesium oxide. यहाँ पे रिएक्टेंट है और यहाँ पे प्रोडक्ट है. ओके स्टूडेंट. लेफ्ट साइड जो है वो रिएक्टेंट है. दिस इज द रिएक्टेंट. मैग्नीशियम्स Mg प्लस ऑक्सीजन O2 gives magnesium oxide MgO. Here we balance the equations 2MgO left hand side 2. So LHS is equal to RHS. So this is the balance equation. Okay. Balance the chemical equation. The chemical equation that shows the chemical reactions needs to be balanced. A balanced chemical equation occurs when the number of the atoms involved in the reactant side is equal to the number of atoms in the product side. So Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2. Then 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2. Types of chemical reaction. Combination reactions. Okay. यहाँ पे types of chemical reactions के बारे में बताया है. सबसे पहले जो है वो है combination reaction. Such a reaction in which a single product is formed from two or more reactants is known as a combination reaction. So CaO, calcium oxide plus H2O liquid gives CaOH twice aqueous. Okay, this is the combination reaction. CaOH twice
कॉम्बाइन हो गया तो हमें मिला CaOH ट्वाइस. कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स वाइग्रोसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लैग्ड लाइम. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है. रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. A solution of slacked lime produced by the reaction is used for whitewashing walls. Calcium hydroxide reacts slowly with the carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls. Calcium carbonate is formed after 2 to 3 days of whitewashing and gives a shiny finish to the walls. It is interesting to note that the chemical formula for marble is also CaCO3. यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, मार्बल का भी केमिकल फॉर्मूला CaCO3 ही होता है. ओके स्टूडेंट, तो ये हमें याद रखना है. यहाँ पे इक्वेशन दिए हैं. सबसे पहले है CaOH ट्वाइस, हम उसको स्लैक्ड लाइम कहते हैं. CaOH ट्वाइस जो है वो एक्वियस फॉर्म में है, प्लस हमने CO2 गैस उसमें ऐड किया है, मीन्स के कार्बन डाइऑक्साइड. सो वी गेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O लिक्विड. ओके, देन यहाँ पे बर्निंग ऑफ कॉल की बात करी है. बर्निंग ऑफ कॉल, कार्बन जब बर्न होता है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस मिलता है. कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स CO2 एक्वियस. देन अगेन फॉर्मेशंस ऑफ वाटर, पानी का जो वाटर का जो बेसिक केमिकल इक्वेशन है वो ये है. ओके, H2 प्लस O2 गैस. हियर द वाटर फॉर्मेशंस इक्वेशंस. H2 प्लस O2 गैस गिव्स H2O एक्वियस, लिक्विड बनता है. देन बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, मीथेन की बात की है यहाँ पे, तो CH4 मीथेन का फॉर्मूला है. मीथेन गैस को हम बर्न करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन O2 अंदर ऐड होता है. सो वी गेट CH4 प्लस O2. हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. ओके, सो दीज आर द कॉम्बिनेशन इक्वेशंस. ओके स्टूडेंट, देन हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की. ये सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन है स्टूडेंट, ये पूरे चैप्टर की नोट्स है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो यू राइट इन योर क्लास वर्क. ओके, exothermic reaction. An exothermic process releases heat and causes the temperature of the immediate surroundings to rise. The rice, potatoes and bread we get contain carbohydrates. These carbohydrates are broken down to form glucose. This glucose combines with oxygen in the cells of our body and provides energy. The special name of this reaction is respiration, is an exothermic reaction. Okay, तो यहाँ पे इक्वेशन दिया है 6,6H12O6 ग्लूकोज का है, प्लस हम उसमें 6O2 ऐड करते हैं. सो वी गिव 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी. दिस इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6. ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. ठीक है, रेस्पिरेशन का ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. देन यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात की. दिस इज डेफिनेशंस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस. एन एंडोथर्मिक प्रोसेस एब्जॉर्ब्स हीट एंड कूल्स द सराउंडिंग्स. द डीकम्पोजिशंस ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. Decomposition reactions. When single reactant breaks down to give simple products, this is a decomposition reaction. Here the formula of ferrous sulfate, FeSO4, heat. So we give Fe2O3 plus SO2 plus SO3. Then 2PbNO2 thrice, मीन्स के लीड नाइट्रेट की बात की तो हमें मिलता है 2PbO, lead oxide plus 4NO2 plus O2. White silver chloride turns grey in sunlight. This is due to the decomposition of silver chloride into silver and chloride by light. Here the equations of silver chloride 2AgClS. सनलाइट की जो है प्रेजेंस में हम
ये जो है वो प्रोसेस करते हैं तो हमें मिलता है सिल्वर प्लस Cl2 2Ag प्लस Cl2। देन यहाँ पे क्लोरीन की जगह पे ब्रोमाइड कर दिया है। ओके, दोनों इक्वेशन सेम है, बट जो है वो हमें हैलाइड ग्रुप का जो है वो मटेरियल यूज़ करना है। तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, दिस आर इंक्लूडिंग इन हैलाइड ग्रुप। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम क्लोरीन की जगह पे ब्रोमीन यूज़ करते हैं। सेम इक्वेशंस 2AgBr सनलाइट, 2Ag सॉलिड प्लस Br2 गैस। The above reactions are used in black and white photography. Displacement reaction. Displacement reaction is a chemical reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element from its compound. Both metals and non-metals take part in displacement reaction. Reaction of iron nails with copper sulfate solution. So Fe plus CuSO4 gives FeSO4 plus Cu. Then Pb plus CuCl2 gives PbCl2 plus Cu. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की यहाँ पे बात की है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑल्सो नोन एज द डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन और मटीरियल मेटाथिसिस is a type of chemical reaction where two compounds react and the positive ions क्या बोलते हैं हम, cation, and the negative ions for anion of the two reactants switch place, forming two new compounds or products. Here the equations Na2SO4 plus BaCl2 gives BaSO4 plus NaCl. देन यहाँ पे बात की है रेडॉक्स इक्वेशंस की। ओके, दिस इज द रेडॉक्स रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शंस मीन्स के रेडॉक्स, ऑक्सीडेशन और रेडॉक्स को मिला के ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस को मर्ज करते हैं तो बनता है रेडॉक्स रिएक्शन। इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व्स अ ट्रांसफर ऑफ एलिमेंट्स बिटवीन टू स्पेसीज। एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन reaction is any chemical reaction in which the oxidation number of a molecule, atom or ion changes by gaining or losing an electron. Oxidation की definition है, this process involves gain of oxygen or loss of hydrogen. Okay, ये याद रखना है। This process involves gain of oxygen और loss of hydrogen. Then reduction की definition है, this process involves gain of hydrogen और loss of oxygen. Okay, gain of hydrogen or loss of oxygen. Here one of the equations CuO means the cuprous oxide plus H2 gives copper plus H2, Cu plus H2। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात की है। इट इज़ द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन, और इट द सब्सटेंस विच इज रिड्यूस्ड itself and oxidize other. This is the oxidizing agent. ओके, अगेन मैं रिपीट करती हूँ। इट इज़ द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन। ओके, गिव्स ऑक्सीजन एंड गेन्स हाइड्रोजन, और इट द सब्सटेंस विच इज रिड्यूस itself एंड ऑक्सीडाइज अदर। देन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है, it is the substance which gives hydrogen or gains oxygen, or it the substance which is oxidize itself and reduces other. Oxidation is the process which involves loss of electrons, but reduction is the process which involves gain of
इलेक्ट्रॉन्स. ओके, ऑक्सीडेशन कैसी प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, but reduction is the process which involves gain of electrons. Then corrosion, the process of slow conversion of metals into their undesirable compounds due to their reaction with oxygen, water, acids, gases, etc. प्रेजेंट इन द एटमोसफियर इज कॉल्ड corrosion. ओके, ये corrosion के डेफिनेशंस हैं. व्हाट इज corrosion? द प्रोसेस ऑफ स्लो कंजर्वेशंस, स्लो कन्वर्जन, धीरे धीरे कन्वर्जन होता है. corrosion मीन्स कि थोड़ा जंग लगना. ओके, अभी रेनी सीजन हो तो हमारी विंडो में जंग लग जाता है. देन जो मेटल्स के ऊपर जंग लगता है ब्राउन कलर का, है ना, जिसमें फेरस ऑक्साइड होता है Fe2O3, फेरस ऑक्साइड FeO. ये फेरस ऑक्साइड्स के अलग अलग मेटल्स है. फेरस की हम बात करें ना, आयन की बात करें तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट एंड आयन पायराइट. दिस इज द मेटल्स ऑफ द आयन फेरस. So the process of slow conversions of matter into their undesirable compounds due to their reaction with oxygen, water, acid, gases, etc. present in the atmosphere is called corrosion. Okay, then यहाँ पे रस्टिंग की बात की है. रस्टिंग, what is rusting? Iron when reacts with oxygen and moisture forms red substance are called rust. So here the definition of rust. What is rust? Iron when reacts with oxygen and moisture. आयन को क्या करना है, जो हम देखते हैं, दिस इज द आयन. ऑक्सीजन के साथ मर्ज हो जाए, मॉइस्चर मीन्स के एयर के साथ भी मर्ज हो जाए, तो जो मिलता है जिसमें F2 सब होता है, जैसे FeOH, थाइस. ओके, दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस जिसमें फेरस हो, मीन्स के आयन हो, ऑक्सीजन हो और थोड़ा बहुत मॉइस्चर्स हो, दिस इज कॉल्ड अ रस्ट. आगे ऐसे इक्वेशन थे Fe के. देखो, दिस इज द इक्वेशंस. ये इक्वेशन सारे आपको याद करने पड़ेंगे स्टूडेंट. ओके, Fe प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट. CuSO4 मीन्स के कॉपर सल्फेट. तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा FeSO4. ओके, प्लस Cu तो सॉलिड ही होगा, FeSO4 गैसियस फॉर्म में हो जाएगा. देन अगेन आगे है Pb मीन्स के लेड. उसका CuCl2 के साथ किया है, मीन्स के कॉपर क्लोराइड, क्यूपरस क्लोराइड, वो भी एक्वियस फॉर्म में है. ठीक है, तो हमें क्या मिला उसके साथ? PbCl2 प्लस Cu मीन्स के कॉपर मिला. देन आगे यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे Na2SO4 है ना, सोडियम सल्फेट. देन उसका BaCl2 बेरियम क्लोराइड के साथ हमने रिएक्शंस किया तो हमें मिला बेरियम सल्फेट BaSO4 और NaCl मीन्स के सोडियम क्लोराइड. सॉल्ट जो है वो रिमूव होता है. इन दिस इक्वेशंस वी गेट अ सॉल्ट. ओके, देन ये जो इक्वेशन है क्यूपरस ऑक्साइड प्लस H2, तो हमें मिला कॉपर प्लस H2O. ओके, ये सारी इक्वेशन एग्जाम में आ सकते हैं. ओके, देन यहाँ पे बात की है रेंसिडिटी की. व्हाट इज रेंसिडिटी? द टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ फूड materials containing fat and oil changes when they are left exposed
to air for long time. This is called rancidity. It is caused due to oxidations of fat and oil present in the food material. It can be prevented by using various methods such as by adding antioxidants to the food materials, storing food in airtight container, and by flushing out air with nitrogen. Okay, so this is the notes of chapter 1. ओके अभी के वीडियो में मैं सारे चैप्टर की धीरे धीरे आपको नोट्स दूंगी स्टूडेंट. ओके, थैंक यू.